4 L40 स्टेजेस में लगेंगे। तरल नोदक पर आधारित यह L40 UH-25 तथा N2O4 को ईंधन के रूप में इस्तेमाल कर विकास इंजन का प्रयोग करता है और यह है द्वितीय चरण GS2 के नाम से हम जानते हैं। Visuals from the vehicle assembly building that stands 18 stories tall. You have watched the integration of the first stage, the core stage, and the 4 liquid strap-ons. And this is the second stage called the GS2. And then the third stage, the cryo stage, which operates on liquid hydrogen and liquid oxygen, being prepared in its integration building and brought to the vehicle assembly building as a single unit for integrating with the launch vehicle. This is the equipment bay being hoisted very carefully and being placed on the cryo stage, upon which the satellite encapsulated assembly will sit. And these are the visuals from the clean room at the satellite preparation facility, the INSAT-3DS satellite getting ready to be assembled. यह INSAT-3DS उपग्रह है जो पूर्ण समायोजित होकर परीक्षित होकर यहाँ समायोजन के लिए लाया गया है। परीक्षण के पश्चात यहाँ इसे पेलोड एडेप्टर के ऊपर समायोजित कर ऊष्मा कवच के अंदर सुरक्षित कर दिया जाएगा। That's the integration of the satellite with payload adapter and then the closure of the two halves of heat shield or the payload fairing as it is called. It will now be moved from the satellite preparation facility to the vehicle assembly building. यह ओजिव आकार का ऊष्मा कवच है जो कि वायुगतिक के दौरान स्थिरता बनाए रखता है। The final movement of the rocket, all decked, all ready, towards the launch pad, where it will occupy few days for its preparation, waiting for the launch. Now this is the visual from the second launch pad, majestic view. यहाँ पूर्ण संयोजित GSLV-F14 लॉन्च व्हीकल दृढ़ता से लॉन्च पैड पर खड़ा हुआ अपने अंतिम जांच के पश्चात प्रमोशन के लिए तैयार और अपने मिशन के लिए तैयार। सभी यहाँ उत्सुक प्रमोशन को देखने के लिए। T-8 minutes. For the GSLV launch, there are two major launch critical ground systems at the launch pad. The re-engageable launch hold and release system, real HRS, ensures that the launch vehicle is held on the pedestal against disturbing forces during the strap-on engine startup and thrust buildup. And the pair of cryo arms which support the heavy vacuum insulated hoses for the servicing of LOX and LH2 from umbilical tower to the launch vehicle. This one separates and swings out milliseconds after liftoff sensing. इस प्रमोशन का घटनाक्रम कुछ इस प्रकार है। यहाँ उल्टी गिनती करते हुए T-4.8 सेकेंड्स पर तरल नोदक वाले 4 L40 स्ट्रैप-ऑन का प्रज्वलन शुरू होगा। उचित दाब की प्राप्ति होने पर LHRS लॉन्च होल्ड एंड रिलीज सिस्टम T-7 minutes को मुक्त कर दिया जाएगा और तभी T0 पर कोर बूस्टर S139 का प्रज्वलन शुरू होगा। इस समय प्रमोशन यान का प्रमोशन होगा और प्रमोशन मंच से उत्थापित होगा। प्रथम चरण लगभग 110 सेकंड तक प्रज्वलित रहकर यान को 40 किलोमीटर की ऊंचाई प्रदान करेगा, लेकिन L40 स्टेज 148 सेकंड तक प्रज्वलित रहेंगे। अब यान की ऊंचाई 70 किलोमीटर की होगी, तब प्रथम चरण को यान से पृथक कर दिया जाएगा। इस यान में द्वितीय चरण का प्रज्वलन पहले शुरू हो गया और पृथक के तुरंत बाद ही द्वितीय चरण का
प्रज्वलन शुरू हो जाता है। इसे हम हॉट सेपरेशन कहते हैं। अब यान 70 किलोमीटर की ऊंचाई पर 2.28 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग के साथ अपने यात्रा जारी रखेगा और द्वितीय चरण का प्रज्वलन के 24 सेकंड के पश्चात 110 किलोमीटर की ऊंचाई प्राप्त कर लेने पर 6 minutes. यान से ऊष्मा कवच को पृथक कर दिया जाएगा। द्वितीय चरण अपना कार्यकाल 141 सेकंड का पूरा कर यान को 130 किलोमीटर की ऊंचाई पर ले जाएगा तथा यहां पर सापेक्ष गति होगी 4.76 किलोमीटर प्रति सेकंड। तत्पश्चात GS2 यानी द्वितीय चरण को यान से पृथक कर दिया जाएगा। यह पूरा काम ऑन बोर्ड कंप्यूटर द्वारा संपन्न किया जाता है। द्वितीय चरण के अलग होने के 1 सेकंड पश्चात ही सबसे जटिल इंजन वाले क्रायो इंजन का प्रज्वलन शुरू कर दिया जाएगा। यह तरल ऑक्सीजन और तरल हाइड्रोजन पर आधारित क्रायो चरण है। यह वह अंतिम चरण है जो INSAT-3DS उपग्रह को करीबन 827 सेकंड प्रज्वलित रहकर उद्दिष्ट कक्षा में स्थापित करेगा। We are 5 minutes away from the launch, and while we wait for the launch to take place, let me appraise the viewers regarding the burn and staging events expected to take place for the nominal flight of GSLV-F14 INSAT-3DS mission. Performance is normal. The 4 strap-on stages, the L40s, will ignite first, and 4.8 seconds later, after ensuring their full thrust, the core S139 ignites. Ignition of S139 coincides with the T0 or liftoff. All the 5 engines develop thrust simultaneously. At 110 seconds into flight and 40 kilometers altitude, S139 burns out and L40 stages continue to develop power till 148 seconds. Though the first stage completes its operation, the staging of first stage is typical hot separation, wherein the second stage, GS2, ignites before the separation of GS1. By now, the rocket is at 70 kilometers altitude. T minus 4 minutes. The burn time of GS2 is 141.4 seconds. By the time the stage completes operation, an altitude of 130 kilometers would have been achieved. During the operational regime, the rocket clears the dense atmosphere and hence 2 major flight events take place. Initiation of closed loop guidance and separation of payload fairing. 3 seconds after GS7 completes its operation, it is separated from the ongoing rocket. The cryogenic upper stage is commanded for ignition 1 second thereafter. This third stage of GSLV is powered by indigenous engine and stage C15. The burn time of third stage is 113 seconds. While only 100 kilometers is added in terms of altitude, the relative velocity addition is remarkable, 5 kilometers per second. T minus 3 minutes. For the viewers to better appreciate this change in velocity, let me tell, when cryo stage begins, the relative velocity is 16,920 kilometers per hour. And by the time it ends its operation, it is 34,920 kilometers per hour. This high velocity is characteristic of geosynchronous transfer orbit. The spacecraft of the mission INSAT-3DS is scheduled to be injected at 1123 seconds into flight, or as close as possible to this time mark when the right orbital parameters are achieved. This is the periapsis of the orbit. Once the spacecraft reaches the apoapsis of this high eccentricity orbit, it performs a burn using spacecraft propulsion to circularize its orbit. सारी गतिविधियां सुचारू रूप से जारी हैं। Oxygen tank ready. सर्वप्रथम हम ध्यान देंगे L40 का इग्निशन शुरू होगा All stations. और कोर stand by for बूस्टर the के time mark. प्रज्वलन के तुरंत पश्चात क्रायो T आर्म minus को 1 minute. अलग रिट्रैक्ट कर दिया जाएगा। All stop sound. Minus 55 seconds. L40 VHPP opened. Minus 50 seconds. Gas bottle ready. Minus 45 seconds. All sequencers armed. Hydrogen tank ready. Cryo stage ready. Minus 40 seconds.
GS2 VHPP opened. minus 35 seconds, minus 30 seconds, L40 VSPP opened. Real-time programs activity. minus 25 seconds, GS2 VSPP opened. GS1 ignition. minus 20 seconds, minus 15 seconds, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, L40 stages 0. are ignited. Plus 5 seconds, Lift off normal. A perfect lift-off. GSLV-F14 Plus 10 INSAT-3DS progressing towards its First stage destination. performance normal. plus जी हाँ, 15 अभी हमने seconds, देखा चारों L40 तथा कोर बूस्टर का प्रज्वलन शुरू हो Plus चुका 20 है seconds. और GSLV F14 उत्थापित हो अपने उद्दिष्ट दिशा की ओर बढ़ता हुआ। Clear sky. We can see the rocket, very beautiful. And from the mission control center here, we can hear the vibrato also. शाम का समय, बहुत दूर तक हम यान को देख पा रहे हैं। इसका सामान्य प्रज्वलन, इसका कंपन भी हमें यहां महसूस होता SHAR 1 है। is in main auto. यान अपनी उद्दिष्ट कक्षा की ओर बढ़ता हुआ। SHAR 2 is in main auto. plus 1 minute, प्रथम चरण के कोर बूस्टर का प्रज्वलन काल 110 सेकंड के करीब होता है और इस दौरान यह 8400 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न कर रहा है। First stage performance normal. प्रथम चरण में कोर बूस्टर तथा 4 L40 स्ट्रप-ऑन बूस्टर सामान्य निष्पादन करते हुए। P2 change over to SPP2. Presently, the core booster and the 4 L40 strap-ons thrusting simultaneously. S139 scheduled to burn for 110 seconds. S39 stage ban out. एनिमेटेड व्यू में आप देख पा रहे हैं 4 L40 तथा कोर बूस्टर Plus 2 S139 minutes. प्रज्वलित है। First stage performance normal. कोर बूस्टर अब बर्नआउट हो चुका है, उसका प्रज्वलन काल समाप्त हो चुका है, लेकिन L40 अभी भी जारी हैं। इन्हें 148 सेकंड पर बंद कर यान से पृथक कर दिया जाएगा। The 4 L40s thrusting presently. The launch vehicle is being tracked by the tracking station at SHAR.